Okay, I hope my slides are visible to everyone. We have just talked about the third structure mode. I was talking about the cases where number one, that mode is the only tool that is applicable for the qualitative data set as well. That is, in case we have a frequency distribution for qualitative data set, what we can do is we can just identify the mode by looking at the most frequent category of that characteristic. That will enable us to identify or locate the mode for using the qualitative data set. So अभी अभी जो हमने एक कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई कर ली वो ये बात कि हमारे पास जो थ्री एवरेजेस हैं वो एवरेजेस हमें एनेबल कर देती हैं नंबर वन सेंटर पॉइंट या लोकेशन of the cluster of the data set को देखने के लिए where arithmetic mean utilizes the all of the data set. It looks at actual values or actual numerical structure of the each of the observation. It add them all and divide them by the number of observation, and hence it locate the number of the center point as well. So obviously, since it look at each and every value of the data set, so the observations having larger value will be having more effect as compared to those which are the values which are smaller or with less face value के. ठीक सिमिलरली हमारे पास जो अगर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी छोटी वैल्यू होगी सारा डाटा सेट बड़ी ऑब्जर्वेशन पे होगा और बहुत छोटी वैल्यू होगी तो ऑटोमेटिकली जो है हमारे पास इसका फर्क जो है वो अर्थमेटिक मीन पर ही आ जाएगा कि अर्थमेटिक मीन उसकी वजह से थोड़ा सा स्मॉलर साइड पे ड्रैग हो रहा होगा. सो अर्थमेटिक मीन का स्ट्रक्चर ये हो गया कि सिंस वी एड अप ऑल ऑब्जर्वेशंस तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मॉल हो रही होंगी वो अर्थमेटिक मीन की न्यूमेरिकल वैल्यू को अपनी तरफ ड्रैग कर सकती हैं और अदरवाइज ये बाकी सारी की सारी वैल्यूज की फेस वैल्यू जो ऐड करके कैलकुलेट हो रहा होता है देयरफॉर ये हमें डाटा का क्लस्टर पॉइंट आइडेंटिफाई करके देता है. अनलाइक दिस मीडियन हमने डिस्कस किया आज के दिन में कि कैलकुलेट कर लेते हैं बाय लोकेटिंग द फिजिकल सेंटर. हमारे पास ऑब्जर्वेशंस बहुत बड़ी हैं बहुत छोटी हैं एक दूसरे से बहुत गैप में है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा. हम मीडियन के लिए क्या करते हैं वी जस्ट अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर यू कैन हैव इवन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर एज वेल बट वी हैव द we need to have the data set in ordered arrangement and then what we do is we locate their physical center uh, by making their head counts or by counting the placement of the observation and look at the physical center of the data set. So median has very less effect or no effect of the observations with respect to their size or numerical values के. तो अगर हमारे डाटा सेट में बहुत एक्सट्रीम वैल्यूज आ रही हैं या हमें शक है कि हमारा डाटा सेट ऐसा होगा कि जिनमें बहुत एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं टू लार्ज और टू स्मॉल सो इट इज रिकमेंडेड कि वी शुड यूज मीडियन सो दैट वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द center of the data set more appropriately and we must avoid mean in that case. ठीक हो गई बात. जबकि मोड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मोड की वैल्यू जो है वो सिर्फ मोस्ट पॉपुलर या मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन को लोकेट कर रही होती है. दिस ऑब्जर्वेशन may or may not be in the center of the data set. This is the only value which is most repetitive only in itself. This may or may have the representation of the data set. There may be a case कि हमारे पास कोई data set में एक small value बहुत ज़्यादा repeat हो जाए या हमारे पास ऐसा कोई case हो सकता है कि कोई बहुत large value जो है वो for some reason most repeated हो रही हो. So in that case हमारे पास mode जो है वो center of the data नहीं locate कर सकता. वो most populous data तो locate कर रहा होता है. And only because of this characteristic this enables mode to be a descriptive tool for nominal or qualitative or categorical data set as well, where for this example just represented in this slide we are looking at a nominal data set where the distribution of number of students enrolled in different fields are given, that is in business and liberal arts, computer science, education and gender studies. These are five different disciplines, the five different categories in which the number of students are enrolled. And from here, we can identify on the basis of mode
that business is the discipline which is most famous, most popular between the students who are getting enrolled in a certain university or in a certain field. Therefore, the mode enable us to identify the most populous or most favorite characteristic or category of the qualitative variable as well. अच्छा, और इसी को अगर हम रियल लाइफ में इस एग्जांपल को मैं एक समझाने की कोशिश कर लूँ, तो आपके जो ड्रेस साइजेस हैं, जो शू साइजेस हैं, उनके बारे में जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो मोड की बेसिस पे होता है। बिल्कुल ऐसे ही कोई आपके व्यूअर चॉइस अवार्ड्स जो होते हैं, उन अवार्ड्स के लिए भी हम क्या देखते हैं कि हम उन वाले आर्टिस्ट को या उन एक्टर्स या एक्ट्रेस को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, या उन ड्रामास को, उन प्रोग्राम्स को सिलेक्ट कर रहे होते हैं व्यूअर्स चॉइस अवार्ड के लिए, जिनके लिए सबसे ज्यादा वोट आते हैं, यानी जो मोस्ट फ्रीक्वेंट, मोस्ट पॉपुलर हो जाते हैं, उनके लिए हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। सो मोड इज द descriptive tool that is being used there for identification of such type of awards as well। जी, कोई बात, यहाँ तक की तो बात हो गई हमारे पास सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव टूल्स की जो हम यूज करना चाहते थे या जो इनको हम अप्लाई करने में इंटरेस्टेड है। अब एक आखिरी बात यहाँ पर इस सारे के सारे स्ट्रक्चर को वाइंड अप करने के लिए, जो हमने आज पढ़ा 3 डिफरेंट टूल्स के लिए, कि हमारे पास जो मीन, मीडियन और मोड की कैलकुलेशन है, वो डिफरेंट डाटा सेट में या किसी भी डाटा सेट में जब हम ये तीनों क्वांटिटीज कैलकुलेट करते हैं, तो दे मे और मे नॉट यील्ड एग्जैक्टली सिमिलर रिजल्ट। ठीक, उसकी रीजन कुछ हो सकती है कि हमारे डाटा के पैटर्न्स या बिहेवियर्स ऐसे होते हैं कि जिन केस में सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जहां तीनों की तीनों ये वैल्यूज मीन, मीडियन और मोड एक जैसा रिजल्ट करें, और इन जनरल इन रियल लाइफ सिचुएशन आमतौर पर ये मीन, मीडियन और मोड किसी भी डाटा सेट में एक जैसा कैलकुलेशंस के एक जैसा रिजल्ट करना जरूरी नहीं आ रहा होता। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दीज टू डाटा सेट। डाटा वन comprises of a little bit more number of observations which are being varying across the values of as low as 300, with a repetition of 300 for 1, 2, 3, 4, 5 times, and the other values are a bit farther from it, with a 400 value repeated for 2 times, then 450 twice, then we have larger observations with a huge gap of 940, 800, 940 and 1050. For this data set, the arithmetic mean resulted as 483.85, while we had 300 repeated a very large number of times and then 400 repeated twice, but the observation or the arithmetic mean was dragged toward the larger observation, that was 1050 की वजह से तो थोड़ा सा ड्रैग होके लार्जर साइड पे रिजल्ट दे रहा था। और जो मिडिल वैल्यू थी यानी मीडियन थी, वो हमारे पास जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज आ रही थी उन्हीं के अराउंड या नियर बाय लाई कर रहा था, क्योंकि क्लस्टर जो है वो लोअर साइड पे ज्यादा था। सिर्फ दो वैल्यूज हमारी बहुत लार्ज आ रही थी, 1050 और 940, तो वो उसकी वजह से मीडियन पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा और मीडियन 400 के अराउंड ही रहा। जबकि मोड जो है उसने आइडेंटिफाई किया मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन को, विच वाजंट द सेंटर, वो तो सबसे लोएस्ट वैल्यू थी। सो मीन, मीडियन और मोड इस डाटा सेट के केस में तीनों फर्क भी आए और तीनों की रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक दूसरे से फर्क हमें नजर भी आ रही है एज डिफाइंड इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सिमिलरली फॉर द सेकंड डाटा सेट वेयर वी हैव वैल्यूज in form of 300 repeated for 1, 2, 3, 4, 5 times, with 400 repeated twice, 450 once, and 300 and 940 and 1080। यहाँ हमारे पास इस डाटा सेट में से 800 की वैल्यू मिसिंग है, जिसको हम नहीं हमारे अवेलेबल नहीं है। सो और इस केस में और थोड़ी सी रेपिटेशन, हमारे पास 450 वगैरह वैल्यूज की भी फर्क आ गई, थोड़ा छोटा डाटा सेट है। इवन इन दैट डाटा सेट वी कैन लुक एट कि अरिथमेटिक मीन की वैल्यू जो है हमारे पास क्या हो रही है, स्टिल ड्रैग्ड हो रही है विद अ लार्जर ऑब्जर्वेशन, दैट वाज 1050 एंड इट इज शोइंग अस द रिजल्ट ऑफ $474, while median remains in the center, that is identified as the 350। और जो मोड है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, डाटा सेट बड़ा हुआ, डाटा सेट छोटा हुआ, डाटा सेट का पैटर्न क्या चेंज हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को देख कर चल रहा था। अब इन सारी चीज़ों से या जो कुछ यहाँ बताने की कोशिश कर रही हूँ उसको मैं आपको कट शॉर्ट फॉर्म में ग्राफिकली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम पूछ क्या रहे थे या देख क्या रहे थे। हमने ये बात यहाँ लर्न करने की कोशिश की कि अगर आपका डाटा वेल बिहेविंग सिमेट्रिक डाटा सेट होता है, so in that case, mean, median, mode all coincide and all lie in the center of the data set, and then we get the result of mean, median and mode equals to each other.
That is for the case of ideally symmetric data set, which is counted as the most well-behaving data set. We have mean, median, mode exactly equal or same at each point. While in case of non-symmetric structure, where there is some kind of skew in the data set, mean, median, and mode are derived away from each other. In case of longer right tail, where we have larger positive values, mean is dragged toward that larger value, and it is the highest value when calculated among the remaining three. The median is less than that, while mode is at the highest peak, that is the most smallest value in the data set in case of right tailed or right skewed observation or positively skewed case. While in case of left skewed, where we have some very small observations in the data set or negatively tailed data set as it is also called, mean is dragged toward the smaller observation and hence appear to be the lesser of the three statistics being calculated. Then comes the median, which is least affected from these observations and remain in the center, while mode follows the most popular value and is equal at the hump of the data set, that is it gets the highest of the observation. ठीक हो गई, ये बात है सारी की सारी जो आज हमने मेनली पढ़नी थी। अब एक आखिरी चीज जो आपने पूछा था हमसे कि मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जस्ट फॉर योर आइडिया, median of the group data set is calculated by a long formula, that is by calculating the class boundaries and locating the median of the frequency। ठीक है, इसके लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को और उनकी यूज बेसिस पे इस फॉर्मूले में हम इनको पुट करते हैं। मैं इसके ऊपर आज के दिन में कोई खास फोकस नहीं करूंगी। अगर हमारे पास कोई एग्जांपल या एक्सरसाइज में हम ऐसा क्वेश्चन देख रहे होंगे तो फिर हम इसके लिए दोबारा फोकस कर लेंगे। मैं यहाँ पर क्विकली आपको सिर्फ ये गाइड कर देती हूँ कि हम इसे कैलकुलेट करते कैसे हैं इन 1 मिनट टाइम, कि हम इसके पास जो स्ट्रक्चर कैलकुलेशन लेकर चलते हैं हम इसमें सबसे पहले इसकी वर्किंग करेंगे बाय कैलकुलेटिंग द cumulative frequencies of the data set। Not writing again. We calculate the cumulative frequency here. That would be 14. 14 plus 12, we have 26. 26, then it would be 44. अगर मैं कुछ कैलकुलेशन गलत कर दूं तो प्लीज आइडेंटिफाई कर दीजिएगा। 54, then we have 69 and 6 as 75. Then for the median class, what we do is we first identify the median class, that is the n by 2th class is being identified, that is 75 divided by 2। क्या आ जाएगा 75 divided by 2? We would be having it as 37.5। let's look at it, that would fall in this class, so this would be my, sorry it's not writing again, this would be my median class। Now I'll be using the formula identified in the previous chunk as median equals to the lower class boundary of this class. If I show you the formula from the previous slide one more time, this is the lower class limit of the model class. Then we have the class interval divided by the frequency and n by 2 minus the cumulative frequency. What I would be doing, I would be calculating the lower class boundary. Oopsie, not writing again. It would be the lower class boundary. What's the trouble? Lower class boundary plus the class interval divided by the frequency multiplied with n by 2 minus the cumulative frequency of the preceding class, that is 21.5 over here, plus class interval is what? क्या class interval है? 24.5 minus 21.5, 3 का class interval आ रहा है, divided by what is the frequency of this model class? 18, and then n by 2 just we have calculated as 37.5 minus the cumulative frequency of the preceding class. Now calculate this median.
This will give you the exact median for the grouped frequency distribution. Usually we are not interested in it, so इसलिए मैंने ये बहुत डिटेल में आपको वहाँ नहीं बताने की कोशिश की थी. I repeat again, for the median of the grouped class, what we do is we identify the cumulative frequency, we calculate the median class, that is done by the sum of observation divided by 2, that is for here in this case the total number of observation was 75. 75 divided by 2, that is 37.5. We located the center point in terms of the cumulative frequency में हमने अपनी median class को locate किया. 26 से बड़ा था 37.5, 44 से छोटा था, इसलिए मैंने इस वाली क्लास को सिलेक्ट कर लिया कि 37.5 जो ऑब्जर्वेशन होगी वो मेरे पास सम वॉट इस 44th वैल्यू के बीच में ही लाई कर रही होगी. यानी वो मुझे 37.5 ऑब्जर्वेशन को देखना था. ठीक है, क्लास बाउंड्रीज में नहीं देखना था, काउंटिंग में ऑब्जर्वेशन लोकेट करनी थी. तो जो 26 ऑब्जर्वेशन से तो ज्यादा थी लेकिन 44 के बीच में लाई करी थी, इसका मतलब था कि 37th ऑब्जर्वेशन जो है वो और 38 ऑब्जर्वेशन किस क्लास में लाई करी है, 21.5 से 24.5 के दरमियान लाई करी थी. तो इसलिए वो हमारे पास हो गया मीडियन क्लास. और उसके लिए फिर हमने कैलकुलेट कर लिया सारे का सारा इस फॉर्मूले में डाल के, वेयर एल स्टैंड्स फॉर द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द क्लास प्लस द न्यूमेरिकल काउंट ऑफ द वैल्यूज, जहां हम इसको अप्रोक्सीमेटली एडजस्टेड वैल्यू कैलकुलेट करें. क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का शेयर डिवाइड कर दिया हमने, that was 3 here divided by the frequency 18 multiplied with n by 2 minus the cumulative frequency of the previous class. और इससे फिर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. ये मैं कोई बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम में इसको टेस्ट करने का इरादा नहीं रखती हूँ. सो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहें तो ज़रूर एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें. दैट्स ऑल फॉर टुडे, बट वेट हेयर, लेट्स फर्स्ट हैव योर क्लास अटेंडेंस एंड देन यू कैन लीव. ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझे जो है बता सकते होंगे या पूछ सकते होंगे. जस्ट हैव अ मिनट्स टाइम हेयर.